of shit! तो ये कहानी है तब की, एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है तब की। What? Okay guys, back to my channel. It's my first video guys, and today we're gonna take a quick look at my wall mount. A wall mount for my punching bag. So let me tell you a story. I started boxing a few months ago and spent time working on various drills, shadow boxing, footworks, punching combination and more to sharpen my technique before moving on the punching bag. Before ordering the punching bag, I thought ये तो easily मेरे wall में लग जाएगा. But I was wrong. Turns out I didn't have enough space, so I thought of getting a wall mount. But then I remembered I'm too broke right now. क्योंकि मैंने already punching bag खरीद लिया था. So I waited, saved some money and finally ordered a wall mount from Amazon. But guess what? मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया. I got a damaged wall mount. You can see it here. ये यहाँ से bent है. Bruh. So I decided to return it and had to wait 1 week for the replacement. 1 week later. Finally, wall mount arrived again. But damaged again. No! God! This time I was too tired of waiting, so I decided no more returns. I'm keeping it as it is. It was high time for me to wait more. But guys, why did I still take this? Honestly, because it was affordable for me and the weight capacity was really good for my MMA training. And I have a heavy bag, so I needed a wall mount that could handle at least 100 kgs. और Amazon वाले wall mount की description में लिखा था कि ये 410 kilos punching weight तक handle कर सकता है, something like that. So obviously I trusted it. एंड हाँ, मैंने सब कुछ रीड करके ही ऑर्डर किया था. रिव्यूज़ भी अच्छे थे, फीडबैक भी सही था, बट स्टिल मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अनलकी था क्योंकि मुझे डैमेज पीस मिल गया ट्वाइस. इफ़ यू हैव अ हार्डवेयर शॉप नियर यू, जैसे लोकल आयरन हार्डवेयर शॉप, वेल्डिंग शॉप या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शॉप, दैन ऑफलाइन लेना ज़्यादा सेफ रहेगा क्योंकि वहाँ आप प्रोडक्ट हाथ से चेक कर सकते हो. मेरे आसपास ऐसी कोई शॉप नहीं थी. That's why I ordered online. But just because this happened to me doesn't mean it will happen to everyone. बस इतना बोलूँगी, ऑर्डर करने से पहले डिटेल्स एंड रिव्यूज़ अच्छे से रीड करो एंड प्रोडक्ट अराइव होते ही चेक कर लेना. बेस्ट ऑप्शन इज़ ऑफलाइन, बट इफ़ यू डोंट हैव एनी शॉप नियर यू देन ऑनलाइन इज़ ऑल्सो फाइन. जस्ट बी केयरफुल. Guys, before ending this video, I want to say to you, whenever you buy a wall mount for your punching bag, make sure you check a few important things. सबसे पहले weight capacity, or which shows a mount that can easily handle your punching bag plus the impact of your punches. Second, material and thickness. Steel का quality, welding, bracket thickness सब strong होना चाहिए. Third, माउंटिंग प्लेट एंड बोल्ट क्वालिटी. बोल्ट्स वीक हुए तो वॉल माउंट स्ट्रॉन्ग हो के भी काम नहीं करेगा. फोर्थ, वॉल टाइप. पंचिंग बैग सिर्फ स्ट्रॉन्ग वॉल पे लगता है, कंक्रीट और ब्रिक वॉल. प्लास्टर वॉल पे मत लगाना. एंड लास्टली, रिव्यूज़ एंड कस्टमर इमेजेस. प्रोडक्ट का रियल कंडीशन वहाँ से पता चलता है. सो या गाइस, दैट्स माय POV. Should you buy this? If you get a good quality piece, then yes, it's worth it. But my experience with Amazon delivery was bad because दोनों बार डैमेज आया. So buy at your own risk.
Alright guys, if you want this wall mount or my punching bag link, I'll mention it in the description. Wanna see how I hang my punching bag? Comment below, I'll make a video on it. And for more MMA videos, don't forget to follow. Tab tak ke liye, bye guys, stay hard, like, share, comment. Stay hard. I'm back.